les saluda Jonathan Chuñir en representación de la comuna San Felipe de Molleturo. Jonathan, ¿qué quisieras que sepa la COP26? Bueno, quisiéramos que sepa lo que nos ha hecho las grandes empresas mineras, lo que nos ha maltratado, nos ha matado y que conozcan nuestra historia. Buenos días, mi nombre es Clever Calle, yo pertenezco al colectivo ecologista Yasunidos Guapundé. ¿Qué quisieras que sepa la COP26? Quisiera que sepan que estamos defendiendo los ríos que nacen en los páramos andinos, que son los ríos que nos traen no solamente el agua que nos abastece para beber, para producir nuestros alimentos, sino el agua que nos trae el canto que nos hace cuencanos y cuencanas. Yo soy Paola y también pertenezco a Yasunidos Cuenca, a la lucha por la defensa del agua en Ecuador. ¿Qué quisieras dejarnos de mensaje? Lo que quiero que la COP26 haga es que deje de financiar a mineras en Latinoamérica, particularmente en Ecuador. Es demasiado duro y agotador tratar de resistir a monstruos que solo quieren destruir el páramo y los bosques nublados de donde sale el agua que tomamos. Desde la región norte del Ecuador, que son unas 4 provincias y donde más de 230.000 hectáreas han sido entregadas para la minería metálica, quisiera decir que nuestro principal problema justamente es esa excesiva demanda de minerales que hay en el planeta, que es causada por el modo de vida colonial de los países del primer mundo que demanda tantos minerales, y ahora último con este supuesto cambio del modelo energético, de la migración hacia las supuestamente energías renovables, que ha crecido una demanda gigantesca de minerales como el cobre, pero también las tierras raras, el coltan y demás, y es la principal presión que hay ahorita sobre los ecosistemas, sobre las comunidades campesinas que tienen que hacer mayor esfuerzo en defenderse de esta agresión minera transnacional. Finalmente, si no se cambia eso, el estallido social lo va a hacer cambiar a la fuerza y no va a ser muy bonito. Tengamos un pronunciamiento nacional de todas las organizaciones que estamos en existencia, donde el Estado haga caso a los campesinos, haga caso a los pobres que estamos en el campo luchando y defendiendo lo que es el agua, la naturaleza, y más es luchando por subsistir nuestras vidas. Muchas gracias y que viva la resistencia. परिवार के साथ सन 2001 में गुजरात शहर में काम की तलाश में गया था और वहाँ हमें पत्थर पीसने की फैक्ट्रियों में काम मिला था और हमने कम से 8 से 10 माह काम किया और फिर हम 8-10 महीना काम करने के बाद हम खेती में काम करने के लिए हम घर आए और घर आने के बाद कुछ दिन बाद हमें सिलिकोसिस
बीमारी हो गई अचानक। डॉक्टर बोल रहे थे कि इसी बीमारी का कोई इलाज है ही नहीं, तो भी फिर हर जगह लोग प्राइवेटों में सभी जगह जा जा के कोई ज़मीन बेचता था, कोई बकरियां बेचता था, कोई अपना घर भी बेच देता था सुधरेंगे करके, पर कोई नहीं सुधरा। काफ़ी लोग ऐसे शांत हो चुके और ऐसी स्थिति आ गई कि बच्चे भी उनके अनाथ हो गए। भारत में इन्वायरमेंटल और ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड्स एक मेजर चैलेंज है और इसी चैलेंज पे सिलिकोसिस पीड़ित संघ पिछले 15 सालों से स्ट्रगल कर रहा है, वर्कर्स को मोबिलाइज कर रहा है। हम लोगों ने इस पे रिसर्च किए, हम लोगों ने कोर्ट में गए, हम लोग मानव अधिकार आयोग में गए और वर्कर्स को मोबिलाइज किया और उनके राइट्स के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन देयर इज ए पॉलिसी गैप्स हैं, लॉज नहीं है, स्पेशली अनऑर्गेनाइज और माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। सो इस पब्लिक हेल्थ हियरिंग के माध्यम से हमें डिमांड करना चाहते हैं कि इंडियाज में मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाया जाए, जो पॉलिटिंग इंडस्ट्रीज और माइंस है उसके लिए पॉलिसीज बनाई जाए, रिहेबिलिटेशन प्लान बनाई जाए और डायग्नोसिस के लिए स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स डेवलप किया जाए। और नॉट ओनली स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, बट ये हमारी भी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि हम ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लेस पॉल्यूटिंग कैसे हो, एक लार्जर सिटीजन्स भी इन्वॉल्व हो और हम भी उसे प्रोटेक्ट करें। और जहाँ जहाँ गवर्नमेंट्स के मैकेनिज्म कमजोर हैं उसे स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म बनाने के लिए, लॉज बनाने के लिए हम सरकार के बोले, कहें और इस जिम्मेदारी लें और सरकार पे हम दबाव डालें और उसके लिए हम एडवोकेट करें। बुंदेलखंड जीविका संगठन के प्रयास से क्षेत्र में व्यवसाय जन्य बीमारी सिलिकोसिस के बारे में जनजागृति हुई और जिला अस्पतालों में कैंप आयोजित कर सिलिकोसिस बीमारी का निदान किया गया, जिससे उत्तर प्रदेश में सिलिकोसिस बीमारी की स्थापना हुई। इसके अतिरिक्त क्रेशर मशीन और पत्थर खदानों में काम करने वाले मजदूरों की विधवाओं को पेंशन से जोड़ा गया। जो किसान खेती करते हैं और उनकी खेती क्रेशर मशीनों के आसपास है, जिसकी वजह से धूल उड़ने से काफी फसल नुकसान हो रहा था। इल्लीगल माइनिंग को रोकने में संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही क्रेशर मशीनों के चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनाने के लिए सरकार और मालिकों पर दबाव बनाया, जिससे इन क्रेशर मशीनों के चारों ओर बाउंड्री वॉल का निर्माण हुआ। संगठन ने मुख्य रूप से जन वकालत भी की है, जिसमें राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संज्ञान में इस मामले को ले गए और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने इस पर संज्ञान लिया है। અમારા આ વિસ્તારમાં પવનચક્કીઓ ઘણી બધી આવી ગઈ છે ને જે ચરિયાણો હતા એમાં બધાએ દબાણ થતું હોય અને જે ઢોર પશુને ચરવા માટેની જે પવનચક્કીઓની બાજુમાં જગ્યા પડી ખોલી એમાં પણ તાર ફેસિંગ કરી ને એ બંધ રાખવામાં આવે છે અને પશુઓને પણ નુકસાની થાય જેનાથી અને જેનાથી વીજ લાઈનની ઘણી લાઈનો ગૌચરમાં સરકારી અને પડતર જમીનમાં થાંભલાઓ નાખવા આવે છે, એમાં ઘણા પ્રાણીઓ અને પશુઓ પક્ષીઓ એ અવારનવાર એમાં ટકરાતા હોય છે, તેનાથી ઘણા મૃત્યુ પામે છે। હાલમાં પવનચક્કીના ઉપરથી રાત્રિના સમયે ગામમાં
સૂતી વખતે પણ રાતે તો એટલો અવાજ આવે ખૂબ કે આપણે રાતે સૂતા હોય બીજાની બાજુના ઘરોને પણ સાંભળી ન શકીએ કે શું કોઈ બૂમરાણા કરે છે, કોઈ કાંઈ કરે તો એ ન સંભળાય એવી ભયંકર પરિસ્થિતિ છે તે પવન ચક્કીના અવાજથી, અને એ કોઈ ધ્યાન દોરતું પણ નથી. હાલમાં પવન ચક્કી છે અને બીજી આ સામીખેરની આજુબાજુ ફેક્ટરીઓ છે, એની રાતે દુર્ગંધ આવે અને એનાથી માણસોને આંખોમાં બળતરા થાય, શ્વાસમાં તકલીફ થાય, પછી માથા મગજ દુખે, સવારે માણસોના ગળા સુકાઈ જાય, સવારે આંખ ખુલી હોય તો એના પણ દબાવી ખોલવી પડે ત્યારે ખુલે, આવી ઘણી પરિસ્થિતિ પણ કોઈ એની ચિકિત્સા કોઈ કરી નથી. Gujarat is the western state of India. In last few years, so many wind turbine parks are coming up so rapidly in the state. As Gujarat has the longest sea line, which is 1600 kilometers, one can find wind turbine parks right from the north of the Gujarat's coastline up to the south. Not just the coast, but also in the mainland and in the central part of Gujarat, there are so many wind turbine parks are coming up. What has been noticed by the local people who live around the wind turbines are such which are not being noted by the agencies or by the government or the companies itself who set up the plants, such as the loss of biodiversity, especially loss of flora and fauna which are being endangered very quickly in the state, which are some of the very rare species of plants and animals which are not found anywhere else. The other things is the land is being grabbed without any law, and therefore people are losing right on the land, their grazing land, the village land is being taken away from them. Therefore the livestock are not getting adequate land for grazing. It is making direct impact on the livelihood of the local people. Gujarat is a hub of ceramic industry in India. Now Thangad is a town in Surendranagar district in Gujarat which houses more than 300 units manufacturing ceramic. In ceramic process, the glazing process exposes workers to the fine silica dust which leads to silicosis. This is highly extractive industry where workers are not given any social security, and large number of workers, almost 90% of workers work as a piece rate worker under false contract. So there is no job security for the workers here. મારા વ્યવસાયનું કરવું છે ગાનું નામનું કરાવી દઉં ખાલી આશ્વાસન આપ્યું કરી દે ન કહી એવી ગેરંટી નથી તમારી મને સમજવા દો કે એ શું એની ઓફર શું છે. ઓફર જો એવી કે મારા પપ્પા અહીંયા 19 વર્ષ કામ કર્યું, હવે એમને કાંઈ કર્યા નતા, પછી કાંક બોલાચાલીમાં અમને દલિતની જાતિ હતી એટલે કે ભાઈ તમને અમારે નથી રાખો એમ કરીને ભાઈ આટલા વર્ષોએ અમને ના પાડતી હતી મારા પપ્પાને. અત્યારે આ પોઝિશન બહુ બીમાર પડ્યા, હવે અમારે ખર્ચા થાય એવું નથી, મારેથી એટલા પૈસા નાખી દીધા. તો મેં 2 દી પહેલા શેઠને જઈને રજૂઆત કરી હતી કે ભાઈ મારા બાપાને મેં 10 લાખ ખર્ચો કર્યો હોય ને હવે મારી પોઝિશન નથી કે જાજો ખર્ચો કરી શકું, કેમ કે દેવું મેં 7 લાખનું કર્યું દવામાં. તો મેં કીધું સાહેબ શેઠ, મેં કીધું થોડો ઘણો તમારેથી મેડિકલમાં કાંઈ હેલ્પ થાય એવું હોય તો કરાવડાવો તો મારા બાપાને 5-25ની દવા મારા ફ્રીમાં થાય અને હું ઈલાજ લાંબા ગાળા લગી જો હાલે તો હું કરાવી લઉં. તો શેઠ કે તમારા પપ્પા કાંઈ હતા નહીં, નામ ચડેલું હતું નહીં, એટલે કે હું ટ્રાય કરું છું જો થાય તો એમને ટ્રાય કરી તો કે તમારા પપ્પાને હવે ઉંમર પૂરી થઈ ગઈ છે, હવે કાંઈ થાય એવું નથી. તો મારા ભાઈ એ કાકાનો દીકરો એને ગિરીશ, એને શેઠને એમ કીધું કે ભાઈ એમના દીકરાનું નામ જો ચડતું હોય તો એમના રેશન કાર્ડમાં એમના છોકરાનું નામ છે જ તે, એ રેશન કાર્ડ ઉપરથી આપણે કાંઈક લાભ થતો હોય મેડિકલમાં
તો એવું કરાય આપો. તેમને એમ કીધું હતું કે થાય એવું હોય તો હું ટ્રાય કરું છું. ક્યાં તો સંબંધ ખરા સંબંધ એટલે એ આશ્વાસન આપ્યું છે. गांव में गश्त के लिए हाके महिलाओं के ऊपर बलात्कार करना और लाठीचार्ज करना करते हैं, तो उसी लिए आदिवासी लोग नया कैंप और रोड के विरोध करते हैं। और रोड कैंप बनेगा तो और ज़्यादा अत्याचार हत्या करने का बढ़ते जाएगा। इसीलिए लगातार कैंप का विरोध करते जा रहे हैं कि आदिवासी लोगों को कैंप ना चाहिए कि उसी जगह में कैंप का जगह में हॉस्पिटल, सोसाइटी, स्कूल होना चाहिए कि इसीलिए हम लोग कैंप ना चाहिए, स्कूल होना चाहिए। इसीलिए कैंप सिंगर आंदोलन में ऐसे कैंप का विरोध करने गए थे तो 4 लोगों का मृत्यु हो गया। वहाँ जो भी चचेकली आवाज़ उठाएंगे तो उनके ऊपर लगातार सरकार नज़र रखने का कोशिश कर रहे हैं। जो मांग लेकर वहाँ जाके बातचीत करने का करेंगे तो उनको फर्जी केस में फंसा के जेल में ले जाना कोशिश करते हैं। तो ऐसे नंदराज पहाड़ में भी हिड में मड़कम थी, वहाँ नंदराज पहाड़ को बचाना चाहती थी तो उसको भी ऐसे फर्जी केस में फंसाकर जेल में डाला गया है। ऐसे करते हैं सब। तो स्कूल पढ़ने वाले बच्चे लोग भी अभी पढ़ने नहीं पा रहे हैं तो उनको भी ऐसी फर्जी केस में फंसाकर जेल में डाला जा रहा है। तो इसी साल भी इसी महीने में 3-4 लोगों को ऐसी फर्जी केस में 10 साल उम्र लड़के लोगों को भी जेल में डाला गया है। तो ऐसे करेंगे तो आगे कैसे पढ़ पाएंगे लड़के लोग। फिर भी वहाँ हॉस्पिटल कहीं जाने भी नहीं पा रहे हैं। 2-3 गोली दवाई लेके आने से भी लाने नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी गोली दवाई भी लाने के लिए किनको ले जा रहे हैं करके उनको भी फर्जी केस में फंसा के ऐसे सरकार जेल में डाला जा रहा Wala po'y gutom kay sa una kung muharbis ni sa amang panguma dako kayo may garbis tungod kay ang yuta tabunok pa kayo ang yuta no nang maingon nato nga walay gutom ka sa una. Sa lupaing ninuno ng mga katutubo matatagpuan ang napakarami saribuhan. Sa kabukiran ng mga maliliit na magsasaka nanggagaling ang sustansyang bumubuhay sa sangkatauhan. Milyon-milyong Pilipino ang nakasalalay sa ipinagtatanggol nilang lupa, pagkain, tubig, hangin at iba pang likas yaman. Ngunit, lagit-lagi, ang buhay ng mga tanggol kalikasan ay nasa bingit ng panganib. For us, we have been harassed, intimidated, threatened, with death threats, vilified, attacked, under surveillance constantly. Since 2010, this has a lot of it has to do with us defending the land, life, and resources of indigenous peoples here in Ifugao. Sa kasalukuyan, mayorya sa 282 pinaslang na tanggol kalikasan ay mga katutubo at magsasaka. Tulad ng mga magsasakang Ifugao na kontraagos sa mga dambuhalang dam sa Cordillera. Tulad ng mga sakadang binawi ang lupa mula sa mga hasyenda ng Negros.
tulad ng mga katutubong lumad na inukit ang pamumuhay at pamana sa mga bulubundukin sa Mindanao. Ang kada pinaslang na tanggol kalikasan ay matalas na dulo lamang ng malawak at sistematikong pag-abuso sa kanilang mga karapatan. Laging nasa bingit ng panganib upang ipagtanggol ang milyon-milyong ektaryang lupain at karagatan. Sila ang tanggulan sa harap ng patitinding polusyon, krisis sa klima at pandarambong ng ating likasyaman. Kailangan natin ang kabayanihan nila. Sa totoo lang, sa mangunguma man ang lupa, hindi naman ingon sa kuan. Yung mga lag-angkong may-ari, hindi naman sila marunong magbungkal sa lupa. Sa ngalan ng lupa, tumindig tayo at makiisa sa tanggulan ng inang kalikasan.